So, now this is the second lecture of the water hammer in pipe. In my first lecture, we have discussed about the water hammer concept. What is the water hammer? How it happens there in the pipe when we close the valve, and also the expression for the gradual closure of the valve. You understand? Because there are the two means to close the valve. Whether we will close the valve gradually or we close the valve suddenly. So in case of the gradual closure of the valve, we have found the expression, we have calculated, we have derived the expression. What is the expression we have derived here? P is equal to rho into L into B upon T. This is the expression which we have got in the sudden gradual closure of the valve. So this expression जो हमने मारी थी, this is the gradual closure of the valve. ये हमने जो इससे पहले वाला टॉपिक है, लेक्चर है, उसमें पढ़ा है, gradual closure of the valve. So in this expression, if you will see the expression, in this expression you will see here that pressure, intensity of the pressure waves produced. This is the relation between the increase in pressure and the time required to close the valve. You understand? Time required to close the valve. If I say, because I am taking the case here, sudden closure of the valve. Sudden means immediate closure without wasting any time. If I say in sudden closure of the valve, T is equal to 0. If I say T is equal to 0, means very less time, or you can say immediately you close the valve, time taken to close the valve, that is equal to 0. If it is like this, so it means that जो आपका जो pressure होगा यहाँ पे, rise in pressure of pressure waves, that is equal to infinite. ये किसके बराबर होगा? Infinite. That is infinite. You understand? But actual, the pressure rise, we say that is finite. जो pressure rise है, pressure wave का, या intensity of the pressure, pressure waves, pressure rise, we can say pressure rise, a pressure wave, that is finite. You understand? So this equation, you can say, this equation is applicable in case of the gradual closure of the valve when the water here, because we are taking water here, when the water is incompressible, or you can say when the fluid is incompressible. You understand? जब इस केस में जो आपका fluid है, जो water है, which is flowing through the pipe, that is incompressible. But in case of the sudden closure of the valve, we can say that the pressure rise, that is finite. Or you can say that when we close the valve, suddenly what happens there? There is a very high intensity of the pressure waves produced. You understand? So that high intensity of the pressure waves which produced due to the water hammer, that compress the fluid which is passing through the pipe. You understand? Or compress the water which is flowing through the pipe. You understand? तो इस केस में आपका you can say the fluid आपका जो होना चाहिए, fluid क्या होगा? Compressible होगा. Fluid is compressible. You understand? Because it will compress the fluid which is flowing through the pipe. You understand? Or second, what it will do? It will stretch the pipe material also, because it is having a very high pressure. So the pipe material will be stretched. अब pipe material के ऊपर there are two cases in case of the pipe material. Pipe material stress होगा, but in case of the elastic material of the pipe, you understand? If we use the elastic material of the pipe, then
there is the effect of the high pressure waves which are produced due to the hammering process. You understand this? But if we will consider the rigid material of the pipe, then it has no effect on the ball of the pipe. You understand? तब उसका बाल पाइप के बाल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. So we can say that in case of the sudden closure of the ball, there are two cases, right? We will consider, or we will take two cases in the sudden closure of the ball. सडन क्लोजर ऑफ द बॉल में हमारे दो केसेस होंगे, डिफरेंट दो केसेस होंगे, और दोनों केसेस के केस में हम डिफरेंट प्रेशर राइज की इक्वेशंस का एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे. यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन से इन सडन क्लोजर ऑफ द बॉल देयर आर वी कंसिडर we will consider two cases, right? First case, when the pipe is of rigid material, जब पाइप आपकी रिजिड मटेरियल का होगा. एंड सेकंड केस, व्हेन द मटेरियल इज इलास्टिक, व्हेन द मटेरियल ऑफ द पाइप इज इलास्टिक. सेकंड केस वी विल कंसिडर व्हेन द मटेरियल ऑफ पाइप इज elastic. You understand? So in both cases, we will get the different equations of pressure rise, of pressure waves which will produced due to the hammering. क्योंकि hammering तो होगा, क्योंकि there is a sudden closure of the ball. So intensity of the pressure wave will be very high in that case. So due to hammering of water, what happens? There will be high intensity of the pressure waves produced both. That is होगा. But now we are considering here कि अगर पाइप का मटेरियल आपका रिजिड है, if you are having the rigid material of the pipe, then the equation of the pressure rise is different. And if we will consider the material of the pipe is elastic, the equation of the rise of pressure, pressure waves, that is different. So it means that we have to derive the two expressions separately. You understand? तो ये दोनों, इसका प्रेशर राइज का हमें जो एक्सप्रेशन है वो हमें सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी विल कंसिडर द केस व्हेन द मटेरियल ऑफ द पाइप इज रिजिड. यू अंडरस्टैंड? तो पहले हम इसका लेंगे कि व्हेन द मटेरियल ऑफ द पाइप इज रिजिड एंड व्हेन देयर इज ए सडन क्लोजर ऑफ द बॉल, पाइप इज रिजिड. पहले तो इसका इक्वेशन करेंगे, पाइप इज रिजिड और मटेरियल ऑफ द पाइप इज रिजिड. दिस इज योर फर्स्ट केस. यू अंडरस्टैंड? So same type of arrangement we have taken here, which we have taken in case of the gradual closure of the ball. The arrangement is same, no difference is there. This is the tank I am taking that is filled with the water, and this is the pipe which is attached with the water, tank, and the water is flowing through the pipe with the velocity v. You understand? So at the end of the pipe, there is a ball, and when we suddenly close the ball, you understand? So when we suddenly close the ball, what happens, as I told you so many times, that pressure waves of very high intensity will produce, and we have to find the expression of the pressure wave
intensity of the pressure wave in case of the rigid material of the pipe. So let us start the expression of this. देखिए A आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप, क्योंकि जे जब आप एक्सप्रेशन करेंगे तो जे पैरामीटर्स वी विल यूज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप. तो L चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, L लेंथ ऑफ द pipe through which the water is flowing, B is the velocity of flowing water, velocity of flowing water through the pipe. P is the intensity of the pressure waves produced when we suddenly close the valve. So you can सीधा लिख लीजिए, P is the intensity of pressure waves produced. You understand? पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, you can understand. And K, this is the bulk modulus of water. Bulk modulus of water, right? So these things we require in the expression of the pressure rise in case of sudden closure of the valve when the pipe is rigid, right? तो जहाँ पे आप इसका एक्सप्रेशन करते हैं. So understand the concept. अब इसमें कंसेप्ट को आप अंडरस्टैंड करें. कंसेप्ट क्या है? जहाँ पे water is flowing through the pipe, this you know, and the wall is attached at the fixed at the wall is fixed at the outer end of the pipe here at point B. So when we will close the valve, you understand? So when we close the valve सडनली, राइट, जब हम बाल को सडनली क्लोज करेंगे करते हैं तो व्हाट हैपन्स हियर, क्या होगा? द फ्लोइंग वाटर इन द पाइप that will stop to flow, you understand, or the water which is flowing in the pipe that will stop to flow. As the water is flowing, you know, it is flowing with some velocity and it is having some kinetic energy, mass into velocity, half into mass into velocity ka square. So it is having some kinetic energy. But when we will close the valve and the water will stop to flow, what happens? Kinetic energy becomes zero, or you can say there is the loss of kinetic energy. But that kinetic energy, where it will go? You know, according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. It can transfer from one state to another state. This is the law of conservation of energy. So जब हम बाल को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? आपका जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो इट बिकम्स जीरो, और यू कैन से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यू अंडरस्टैंड? ये पॉइंट आपको क्लियर है? So this loss of kinetic energy, where it will go? तो ये आपका that will converted into strain energy. You understand? तो ये आपका
converted into strain energy. So this kinetic energy, the loss of kinetic energy, this will converted into strain energy, or you can say gain in strain energy. अब ये जो strain energy है, अब ये strain energy कहाँ पे जाएगी? Where it will go? So strain energy, पहला तो converted to strain energy, that is the stored in the water. That is stored. This strain energy stored in the water. ये पानी में स्टोर होगी, right? Stored in the water. That is the gain in stored in the water. That is तो gain in strain energy. So that is gain in strain energy in water. You understand? तो एक तो ये वाटर में जाएगी. Now tell me whether this strain energy that is having the effect on the ball of the pipe. चाहे बॉल जो पाइप की बॉल है वहाँ पे जो स्टोर होगी नहीं होगी. इन दिस केस जो कंप्लीट आपकी स्ट्रेन एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी दैट विल कंप्लीटली stored in the water. That has no effect on the ball of the pipe. You understand here? इसका कोई अफेक्ट आपको जो पाइप की बॉल है उसके ऊपर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Tell me. Because here I am taking the case that the material of the pipe is rigid. You understand? पाइप का मटेरियल क्या है? रिजिड है. यू अंडरस्टैंड? इट इज नॉट हैविंग द इलास्टिक मटेरियल, इट इज द रिजिड मटेरियल. सो जो सारी की सारी जो स्ट्रेन एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी व्हेन वी क्लोज द बॉल सडनली, और काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होगा मींस जीरो, कन्वर्ट होगी जीरो में, वो प्रोड्यूस करेगी, वो कन्वर्ट करेगी किसको? कन्वर्ट किस में होगी? स्ट्रेन एनर्जी में. एंड दिस स्ट्रेन एनर्जी विल कंप्लीटली स्टोर्ड इन द वाटर. सो यू कैन से देयर इज द गेन इन स्टोर्ड एनर्जी, गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन द वाटर, बट इट विल नॉट स्टोर इन द pipe of the ball of the pipe, because the material of the pipe here I am considering as a rigid. You understand? तो आपकी जो इक्वेशन जो जहाँ पे होगी, जो इसका मतलब यही हुआ, इसको बता दीजिए. ये only I have to show you here. Only this concept we have to understand here. तो so you can say that loss of kinetic energy, this is equal to gain of strain energy of water. You understand? Loss of kinetic energy, this is equal to gain of strain energy of water. तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो किस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी जो वाटर की है उसमें इंक्रीज हुआ, उसका गेन हुआ, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी जो थी वो पानी में स्टोर हो गई. यू अंडरस्टैंड? ये पाइप वॉल के ऊपर क्यों नहीं गया?
बिकॉज द मटीरियल ऑफ द पाइप इज रिजिड. यू अंडरस्टैंड. तो ये सारी की सारी जो हमें कन्वर्शन करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का जो कन्वर्ट हुई स्ट्रेन एनर्जी में, दैट इज स्टोर्ड बाय द वाटर. यू अंडरस्टैंड. तो ये आपका हो गया. दिस इज द इक्वेशन बेसिकली. इसी के ऊपर अब देखिए जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर मैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सो दिस इज इक्वल टू हाफ mass flow rate into B square. B is the velocity of the flowing water. You understand? Half mass flow rate into V square. Or you can say, you can write this equation by this. Half mass flow rate क्या होगा? Rho area of the pipe A, L length of the pipe. This is the volume, rho into volume. This is mass flow rate. You understand? A into L, this is the volume, so this is rho. Density into volume, this is mass flow rate into B square. You understand? So this is your loss of kinetic energy. ये जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था, ये सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये जीरो हो गया. यू अंडरस्टैंड. अब ये सारी की सारी एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इन द स्ट्रेन एनर्जी एंड विच इज स्टोर्ड बाय द वाटर. अब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द वाटर और गेन ऑफ द स्टोर एनर्जी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी बाय द वाटर. गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी बाय द वाटर. सो दिस इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेन एनर्जी का क्या फार्मूला है वाटर के केस में, पी स्क्वायर अपॉन के. दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी फार्मूला पर यूनिट वॉल्यूम, बट वी आर टेकिंग द कंप्लीट वॉल्यूम दिस एंड दिस. यू कैन से अगर पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगा. यू अंडरस्टैंड. और यू कैन से दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज हाफ into P square K. वॉल्यूम क्या है, पाइप का वॉल्यूम क्या है? A is the area of cross section of the pipe and L is the length of the pipe. So this is A into L. You understand? So this is your equation number second. You understand here? This is your equation number second. Now, as we have already discussed, loss of kinetic energy, this is equal to the gain of strain energy by the water. You understand, right? So it means that if we will equate the two equations, तो ये equation loss of kinetic energy का और gain of stored energy by the water, both equations are the same, because the kinetic energy which we will lose here, or loss of the kinetic energy, that is converted into the strain energy, and that strain energy is stored by the water. So it means that these two equations we can equate them. ये दोनों equations क्या हैं, बराबर हैं, हम इसको हम equate कर सकते हैं. You understand here? So we can equate the equation number 1 and equation number 2. So equation number 1 और equation number 2 को आप क्या करें, equate करें. तो that means that half into rho into A into L into V square, right? This is equal to half into V square upon K into A into L. You understand? So these two equations we can equate. Loss of kinetic energy, this is equal to the gain of strain energy by the water. So, no, yes, we have to simplify and we have to find the value of pressure. Pressurize हमें rho 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, area J कैंसिल, length J कैंसिल हो गया. राइट. Now we got the equation. Therefore, हमें क्या मिला? Rho into B square. This is equal to
पी स्क्वायर अपॉन के, राइट, रो इंटू वी स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? पी स्क्वायर का वैल्यू, पी का वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर राइज वी हैव टू फाइंड आउट। तो पी स्क्वायर को हम एक साइड रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दें, और यू कैन से, वी कैन राइट इट लाइक दिस, पी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के रो इंटू वी स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज योर पी? देयरफॉर पी इज अंडर रूट ऑफ, ये सारे का सारा अंडर रूट होगा, बी स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूं, इंटू के इंटू रो। दैट इम्प्लाइज, बी स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिएगा अंडर रूट के, तो क्या बन जाएगा ये? P इज इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ के इंटू रो, राइट? So this equation we will get the pressure rise. हमें ये इक्वेशन प्रेशर राइज की मिलेगी। यू अंडरस्टैंड? B is the velocity of the water, K is the bulk modulus of water, and rho is the density of the water, because we are using here the water, right? So if I have to write this equation in terms of C, velocity of the waves produced, तो वो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। Therefore P is equal to V into K into रो। ये तो जो ऐसे ही है। अगर मैं इसको रो के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और रो के साथ डिवाइड करता हूं, तो इज देयर एनी इफेक्ट? नो, बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाई रो एंड डिवाइडिंग बाई दिस बाई रो। यू अंडरस्टैंड? अब रो और रो, ये रो स्केयर हो गया, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू बी इंटू रो। इसको आप बाहर ले लीजिए, रो स्केयर अंडर रूट के बाहर जाएगा तो रो आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? और जो बीच में आपकी इक्वेशन बनेगी, दैट इज इक्वल टू के अपॉन रो। यू अंडरस्टैंड? के अपॉन रो, राइट? बट हम जो आपका अंडर रूट ऑफ के अपॉन रो, this is equal to C, and what is your C? C, this is the velocity of the waves produced, right? Or you can say velocity of the wave produced. So C आपका क्या है? ये velocity है, velocity of waves produced. You understand? So this is denoted by C. C is the velocity of wave. So it means that therefore P, pressure rise, in this case when the ball is rigid, pressure rise, this is the equation B into rho into C, और इसको थोड़ा सा आप इसमें लिख लीजिए, रो को पहले लीजिए, रो इंटू बी इंटू सी। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द pressure rise when pressure rise are the pressure of the high intensity waves produced. This is the equation when we are considering the material of the pipe is rigid. You understand? तो इस इक्वेशन को आप अंडरलाइन करके इसको आपने याद रखना है। You understand this? सडन क्लोजर के केस में when the material of the pipe is rigid, the equation of the pressure rise, this is equal to rho into B into C. You understand this? So this is one equation. अब second case हम इसका करेंगे। So second case हमारा क्या होगा इसमें? When the material of the pipe is elastic. You understand? तो second case हमारा when the material of the pipe is elastic. So now second case we are considering here. क्या था हमारा second case? Second लिख लीजिए। When the material of pipe is elastic. जब हम सेकंड केस में कंसिडर करेंगे कि जब हमारा
पाइप का मटेरियल जो है वो क्या होगा, इलास्टिक होगा, राइट। तो इसमें भी इसका एक्सप्रेशन भी हम करते हैं, ये एक्सप्रेशन फॉर rise in pressure. Rise in pressure are the pressure of the pressure waves produced in this case when the material of the pipe is elastic because it is having the different condition. First में जो मैंने pressurize in case of the sudden closure of the valve, जो मैंने equation drive किया था, here we have considered that material of the pipe is rigid, and second thing here, second case में I am considering that the material of the pipe is elastic. सेम है जहाँ पे A आपका एरिया, कुछ पैरामीटर लिख लेते हैं जहाँ पर भी पैरामीटर्स होंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप L, लेंथ ऑफ पाइप B, velocity of water, velocity of water flowing in the pipe, flowing in the pipe or through the pipe, कुछ भी लिख लो, right? Here I am considering the elastic material, तो हम E की वैल्यू लिख लेंगे। E का क्या मतलब है, चंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप मटेरियल ऑफ पाइप material. You understand? So Poisson ratio ले लो, right? So 1 by m, you can say this is the Poisson ratio. So 1 by m, that is Poisson ratio. You understand? जहाँ पे कैपिटल D आपका डायामीटर ऑफ पाइप और फाइनली P इज द, फाइनली P आपका क्या होगा, P जो है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर waves produced due to the hammering, right? So these are some parameters which we require during the expression of this rise in pressure when the pipe material is elastic and in case of sudden closure of the valve. You understand? सो कंसेप्ट इसका सेम है, इसमें कंसेप्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। सो व्हाट इज द कंसेप्ट हियर, सेम अरेंजमेंट आई हैव टेकन हियर। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप एंड एट द एंड ऑफ द पाइप देयर इज ए बॉल। इन दिस केस वी सडनली क्लोज द बॉल, हम बॉल को सडनली क्लोज करेंगे। तो वही बात है, व्हेन वी विल क्लोज द बॉल, तो आपका क्या होगा, सडनली क्लोज द बॉल। When we will suddenly close the ball, what happens here? As the water is flowing, so it is having some kinetic energy. And that kinetic energy, as I told you, there is a loss of kinetic energy because the water will stop. So it means that the kinetic energy of the flowing water, that becomes zero. And that kinetic energy is converted into strain energy. You understand here? जो strain energy में convert होगा और where the strain energy will go, तो
सडनली क्लोज द बॉल, काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आपकी जीरो होगी, मीन्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड, ये जो आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कन्वर्टेड इनटू strain energy. You understand? This is converted into strain energy. Now, this strain energy which we will get, or you can say that when the kinetic energy, when there is the loss of kinetic energy, or you can say when kinetic energy of the flowing water becomes zero, that will produce the strain energy. And this strain energy, where it will go, जैसे आपको पता है, first, that is the gain of strain energy. This strain energy first, that will, ये जो आपकी strain energy है ये दो पार्ट्स में चली जाएगी. फर्स्ट पार्ट होगा stored by the water. एक पार्ट तो strain energy का that will stored in the water, or you can say gain of the stored energy by the water, gain of the stored energy by the water. And the second part, अब देखिए इस केस में जो कंडीशन है हमारी, क्योंकि फर्स्ट केस में कंडीशन था द मटेरियल इज रिजिड, सो इट मीन्स दैट द स्ट्रेन एनर्जी which we will, or you can say which is produced by this when there is a loss of kinetic energy and that is converted into strain energy. In that case, total strain energy that is stored in the water, because the material of the pipe is rigid, so ball of the pipe has no, so this strain energy has no effect on the ball of the pipe in that case. But in case of the elastic material, total strain energy अगर हमें फाइंड आउट करनी है, that is not only stored by the water, but that is also stored by the ball of the pipe. You understand? तो एक तो पानी में स्टोर होगी और सेकंड स्टोर होगी by the ball of pipe through which the liquid is flowing. आपको ये पॉइंट समझ आ गया? तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन अगर हम लिखे, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू गेन ऑफ स्टोर एनर्जी बाय द वाटर प्लस गेन ऑफ स्टोर एनर्जी बाय द बॉल ऑफ पाइप. यू अंडरस्टैंड? ये आपका इक्वेशन बनेगा. So your equation becomes now, देखिए, now the equation becomes, हमारी क्या इक्वेशन होगी जहां तक चीजें आपको समझ आ गया? So we can write down like this: loss of kinetic energy, right? Loss of kinetic energy of the water loss of kinetic energy of the flowing water, this is equal to gain of strain energy of water plus strain energy
stored by the ball of the pipe. Strain energy stored by the balls of pipe. You understand? So इस केस में आपका जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा. जो रिजिड केस था उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू द गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ओनली, और इसी को इक्वेट करके हमने इक्वेशंस जो था प्रेशर राइज का भी फाउंड देयर. बट इन केस ऑफ व्हेन द मटेरियल ऑफ द ball of the pipe or the material of the pipe is elastic, so in that case the strain energy which we will get by the loss of kinetic energy, that strain energy is not only stored by the water, flowing water or the water, that will also stored in the ball of the pipe. But this is only the difference. ये आपका इक्वेशन बनेगा. अब देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको पता है, जब भी किया हाफ इंटू मास फ्लो रेट इंटू बी स्क्वायर. तो मास फ्लो रेट को हम क्या लिखते हैं, रो इंटू ए इंटू एल इंटू बी स्क्वायर, राइट. चलो ये सेपरेट लिख लेते हैं. सो दिस इज योर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये इतना लॉस आपका काइनेटिक एनर्जी का हुआ. ये आपका लॉस जो हुआ, ये क्या हुआ, हाफ रो ए एल वी स्क्वायर, राइट. यू अंडरस्टैंड दिस. अब देखिए गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ये तो आपको पता है, इसको सेपरेट लिख लेते हैं हम. तो गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वाटर, ये अभी अपने किया, दैट इज 1/2 P square upon K. This is per unit volume into volume. You understand? Into volume, or you can say it can be written as like this, half into P square into K into A into L. ये इक्वेशन आ गया आपका गेन ऑफ strain energy of water. You understand? जहां तक तो चीजें आपको क्लियर हैं, गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द वाटर, द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो इसको मिटा देते हैं हम. अब देखिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये पार्ट तो आपने पहले निकाला था. यू अंडरस्टैंड दिस. अब नो व्हाट हैपन्स टू द पाइप. एक पार्ट तो आपका वाटर में स्टोर हो गया, दैट ये आपका इक्वेशन हो गया. यू अंडरस्टैंड. सो यू कैन से दैट when we suddenly close the valve, ये तो आपको पता है, when we suddenly close the valve, what happens that due to this or due to the water hammer effect, there will be very high intensity of pressure waves produced. You understand? So that high intensity pressure wave जो produce होंगी, that will affect the material of the ball of the pipe. You understand? ये क्या करेंगी? Because here I am considering the pipe is elastic. तो जो strain energy ये absorb करेगी, you understand here, जो पाइप का बॉल है
the strain energy which is stored in the material of the ball of the pipe, उससे क्या होगा, what happens there? तो ये this is important point, we will write on. So what happens there? High तो इसमें अगर आपका क्या होगा, हाई इंटेंसिटी प्रेशर वेव विल प्रोड्यूस ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ द बॉल. तो यू कैन से दैट ड्यू टू, ये पॉइंट आप लिख लें या नोट कर लें, ड्यू टू हाई इंटेंसिटी, ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ pressure of pressure waves, due to the high intensity of pressure waves, what happens, क्या होगा? As the wall is made of elastic material, what happens there? There will develop two types of stresses. जो पाइप का मटेरियल, पाइप का जो वॉल है उसके ऊपर दो टाइप की स्ट्रेसेस जो हैं प्रोड्यूस होंगे. यू अंडरस्टैंड? सो देयर विल develop two types, ये इसका इफेक्ट होगा, टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस बिकॉज द मटीरियल इज इलास्टिक. तो ये जो बॉल का, जो पाइप का बॉल है उसके ऊपर ये दो टाइप का स्ट्रेसेस डेवलप होंगी. तो ये कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी? दैट इज circumferential stress, right? And the second one is longitudinal stress. You understand? Circumferential and longitudinal stresses will develop on the wall of the pipe. Longitudinal. Longitudinal stress, right? Circumferences stress, so ये क्या होगा? Circumferential stresses, that is sigma c, that is denoted by sigma c, this is equal to P into d diameter 2 into t, where t is the thickness of the ball of the pipe, right? और जो longitudinal stress होगी, this is sigma L P into D upon 2 into D. So these two types of the stresses will develop on the wall of the pipe. ये दो टाइप की stresses हमारी develop होंगी पाइप के ऊपर, right? So you can say that there are the two stresses that will develop on the wall of the pipe. You understand this? ये तो आपको पता है. अब पानी का तो दैट विल बी राइट ऑन लेटर ऑन, बट फर्स्ट तो ये स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगी, तो देन इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी कलेक्ट करना है तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड
पर यूनिट वॉल्यूम इन द पाइप मटेरियल, राइट। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होगा इस केस में? स्ट्रेन एनर्जी stored in the pipe material। तो आपने जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले भी पढ़ा होगा, इफ द टू स्ट्रेसेस आर गिवन, तो एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू, तो स्ट्रेन एनर्जी का क्या फार्मूला होगा? The two stresses sigma c and sigma l is here. In this case, strain energy, this is equal to 1 upon 2 E sigma c square plus sigma l square minus 2 sigma c into sigma c into sigma l, right, divided by. So this is the relation, right? Strain energy stored. तो ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपकी होगी पर यूनिट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये यू से डोनेट कर लेते हैं, राइट। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यू अंडरस्टैंड। तो पहले हम ये इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, बाकी बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे, राइट। आप क्या करें इसमें, सिग्मा सी और सिग्मा एल का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, तो आपका यू का वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी, यू क्या है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज 1/2E, दिस इज सिग्मा सी स्क्वायर, सो दिस इज योर पी स्क्वायर, सीधा लिख लो आप, P इंटू डी अपॉन 2T का होल स्क्वायर, बिकॉज सिग्मा सी दिस इज इक्वल टू P इंटू डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप एंड T इज द थिकनेस ऑफ द पाइप, प्लस सिग्मा एल P इंटू डी अपॉन 4T, और T क्या आपका? थिकनेस ऑफ द ball pipe, which is comparatively very very small as compared to the diameter of the pipe, you understand, minus 2 into P D 2T into P into D 4T upon M, you understand, right? Upon M, 2 into 1 upon M, you understand, 2 into 1 upon, तो ये आपने पुट कर लिए। अब अगर मैं लिखता हूँ पॉइजन रेशियो इन 1 upon M, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये याद रखें, पॉइजन रेशियो, दिस इज 1 अपॉन M, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, देयरफॉर U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2E P स्क्वायर D स्क्वायर 4T स्क्वायर प्लस P स्क्वायर D स्क्वायर 16T स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 कर लीजिए, राइट।
ये आ जाएगा पी स्क्वायर डी स्क्वायर पी स्क्वायर डी स्क्वायर and 8t square. You understand? Sorry, not this is 1 by this is 1 by m. This is equal to 4. 1 by m. This is equal to 1 by 4. Right, and this is 8 t square. You understand? तो क्या इक्वेशन आ गया इसका? देयरफॉर u इज इक्वल टू 1/2e पी स्क्वायर डी स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 16t स्क्वायर, and this is minus p square into t square upon a to 16t square. You understand? ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा. राइट, यू अंडरस्टैंड दिस? ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो गई. And the equation of the strain energy, now you will get sorry, not this equation, but I am saying this and this one cancel, right? Right? तो ये आपका कैंसिल हो गया. Now your equation becomes, so strain energy stored in the pipe per unit volume. क्या है? strain energy stored strain energy stored in the pipe per unit volume. क्या होगा? That is U is equal to 1/2e से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? P स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, P स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर upon 8et square. This is 8et square. This is the strain energy stored in the pipe per unit volume. और जो टोटल, अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करना है वॉल्यूम के ऊपर, तो इसका मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी strain energy stored in the pipe. ये पहले पर यूनिट वॉल्यूम था, तो टोटल पाइप में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप क्या होगा? जो पाइप का वॉल्यूम है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप, दैट इज द पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पाइप, द स्ट्रेन एनर्जी दिस. सो इस वक्त आपका आएगा U, टोटल U, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप, दैट इज P स्क्वायर
into d square upon 8e t square into a into L. You understand? Into A into L. A into L, this is the volume of the pipe. You understand here? A into L, this is the volume of the pipe. This is the total strain energy. A total strain energy which is stored in the pipe. ये आपका आया. अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए आप. तो आई थिंक दिस विल बी रिमूव्ड नाउ. ये तो आपका कैलकुलेशंस पार्ट हो गया सारा. अब देखिए, अब अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप की बात करूं, अगर ये हो गया पाई इंटू डी इंटू एल, राइट, पाई इंटू डी सॉरी नॉट एल, व्हाट इज द थिकनेस, पाई डी इंटू टी. दिस इज, ये आपका हो गया एरिया, राइट. तो एरिया की जगह वी कैन राइट इट एज पाई इंटू डी इंटू टी. दिस इज द ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप. Because here the thickness is very small, so we can calculate the area of the cross section like this. We will not use here pi by 4 d square, because in this case I'm assuming the thickness also, and thickness is very small as compared to the diameter, so area is like this. तो मैं area की जगह ये पुट कर दूँ U, strain energy stored in the pipe. So this is equal to P square d square upon 8e t square. ये तो जहाँ पे आ गया एरिया की जगह वी कैन राइट इट पाई इंटू डी इंटू टी इंटू एल. यू अंडरस्टैंड? पाई इंटू डी इंटू टी इंटू एल. दिस इज एरिया इंटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम. तो जे चीज़ और जे चीज़ आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट. अगर इसी को मैं इसी तरीके से लिखूं पी स्क्वायर, तो आ गया ये है इनटू डी स्क्वायर. 2 मैं इधर ले लूं, 2 ऐसे ले लूं. ये पाई है, अगर मैं लिखूं पाई अपॉन 4 इनटू डी स्क्वायर, राइट, इंटू डी इंटू एल लिख सकता हूं ऐसे में. देख लीजिएगा पी स्क्वायर डी स्क्वायर और डी, ये डी क्यूब आ गया. 8 को मैंने इसी तरीके से लिखा, 8 को मैंने इसको कन्वर्ट किया 2 इंटू 4 8 करके. तो ये जो आपका पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर है, ये किसके बराबर है आपका? दैट इज द एरिया. पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर ई टी भी, ये भी तो लिखना था, पाई 2 ई टी, राइट. दिस इज पी स्क्वायर अपॉन 2 ई टी. दिस इज द एरिया ऑफ द पाइप, राइट. ये तो आपका एरिया ऑफ द
बॉल, जो बॉल का एरिया था पाई इंटू डी इंटू टी, ये आप स्मॉल ए ले लीजिए, राइट। हेयर आई एम टेकिंग हेयर, ये जो ए आपका है दैट इज द एरिया ऑफ द बॉल। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये वो क्या हो गया पी स्क्वायर 2ET, ये आपका आ गया ए, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इंटू टी इंटू एल। यू अंडरस्टैंड? पी स्क्वायर 2ET ए इंटू डी इंटू एल। तो देयरफॉर इसको आप अंडरलाइन करके लिख लो, पी स्क्वायर ए इंटू डी एल अपॉन 2ET। दिस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप। समझ आ गया? अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप जहां पे आपको मिल गया। यू अंडरस्टैंड? ये आपका आ गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट विल स्टोर इन द बॉल ऑफ द पाइप, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। अब आ जाइए इसका जो प्रॉब्लम्स थी एक्चुअल, उसमें देखिए हमारा इक्वेशन था दैट इज लॉस ऑफ kinetic energy, this is equal to strain energy stored by the water plus strain energy stored by the ball of pipe। You understand? the equation थी। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बता दीजिए, ये नीचे वाला रहने दीजिए। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू मास फ्लो रेट रो इंटू ए इंटू एल इंटू बी स्क्वायर। दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द वाटर, क्या था चेक कर लीजिएगा, पी स्क्वायर अपॉन के इंटू ए इंटू एल, राइट। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द वाटर, पी स्क्वायर के, सॉरी हाफ यस, हाफ पी स्क्वायर के इंटू ए इंटू एल, and the strain energy stored by the ball of the pipe, this is given by this equation, that is P square into A D L upon 280, right? So this is the equation. हाफ एंड जे कैंसिल हो गया। अब देखिए ए एल ए एल ए एल ए एल ए एल ए एल, ये कैंसिल हो गया। यू अंडरस्टैंड? सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स rho b square so now the equation becomes, देखिए यहाँ पे
रो क्या लेफ्ट हुआ यहाँ पे, रो बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर अगर मैं इधर से कॉमन ले लूँ, ये आ गया पी स्क्वायर कॉमन आ गया 1/k प्लस d/et. You understand? Therefore, पी स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर रो इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/k प्लस g/, you understand? राइट तो therefore P is equal to under root rho into B square upon 1/k plus d/et P, right? और P is equal to B को बाहर निकाल लीजिए आप, एंड रेस्ट इज रो अपॉन 1/k plus d/et. So this is the formula of the pressure rise in case of sudden closure of the ball when the pipe material is elastic. ये आपका फार्मूला है जब आपका राइट तो ये आपका आ गया प्रेशर राइज दिस इज द प्रेशर राइज या इंक्रीज इन प्रेशर waves when the pipe is elastic. You understand? तो ये फार्मूला याद रखिए. This is the formula of the intensity of the pressure waves when we are using the material of the pipe is elastic. You understand? अब देखिए इसी में देखिए, suppose I am considering the rigid pipe, right? मैं क्या कंसिडर करता रिजिड पाइप, और रिजिड पाइप के केस में जहाँ पे लिखते हैं रिजिड पाइप केस में जो अपने पी जो फार्मूला किया था, पी फार्मूला क्या था, बी दिस इज अंडर रूट ऑफ के इंटू रो, राइट? तो रो को हमने करके तो फिर अब इसका सी में कन्वर्ट किया था. अब देखिए इन केस ऑफ रिजिड पाइप जो हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी, कहाँ पे लिखिए, इसको मिटा देते हैं.
देखिए, अगर रिजिड पाइप का केस लेते हैं हम, इसी फार्मूले से हम ड्राइव कर लेते हैं इसको, इन केस ऑफ रिजिड पाइप, और जहाँ से ही पता लगेगा कि जो हमने फार्मूला ये ड्राइव किया इक्वेशन ठीक है। इन केस ऑफ रिजिड पाइप, देखिए रिजिड पाइप के केस में जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी क्या होगी, वेरी लार्ज। रिजिड पाइप के केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, E is large, means young modulus of elasticity. This is very large, right? You understand here? The value of E, or you can say value of E is large, very large. तो जब वैल्यू ऑफ E वेरी लार्ज होगी तो ये आपकी टर्म्स है, दैट इज D अपॉन ET। अगर इस एक्सप्रेशन में देखें क्या है, रो अपॉन 1 अपॉन K प्लस D अपॉन ET। अगर आपका E वेरी लार्ज है, राइट, तो ये जो आपकी टर्म है ये क्या है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लेजिबल, दिस इज वेरी स्मॉल, हम इसको नेग्लेजिबल कंसिडर करेंगे, राइट, और यू कैन से इट इज ट्रीटेड एज जीरो। तो जब नेग्लेजिबल कंसिडर करेंगे तो ये टर्म्स आपकी नेग्लेजिबल कंसिडर किया, तो इसमें जो प्रेशर राइज है, देखिए जहाँ से भी बी अंडर रूट ऑफ रो अपॉन 1 अपॉन के, और इसको आप अगर जीरो ले लेते हैं डी अपॉन ई अपॉन टी को, तो ये देखिए ये रिजिड पाइप के केस में जो फार्मूला था वो क्या था, बी अंडर रूट ऑफ के इंटू रो, राइट, के इंटू रो, दिस इज द फार्मूला। प्रेशराइज इन केस ऑफ, वो जब वेलोसिटी में मैंने कन्वर्ट किया था तो तब मैंने इसको किया था रो इंटू रो करके, तो ये रो स्क्वायर आ गया, रो बाहर आ गया, के अपॉन रो सी के बराबर आ गया, राइट। सो बेसिक फार्मूला था वो क्या था, दिस K into rho. So this is the pressurized formula for the case of when the pipe material is rigid, right? Or when the material is elastic, the pressure rise in case of pressure rise due to hammering in case of sudden closure of the ball, right? उस वक्त पाइप में प्रेशराइज होगा P is equal to B upon rho upon 1 upon K plus D upon ET। ये सीधा लिख लेते हैं, D upon plus D upon ET, right? So this is the relation. So these are the two expressions today we have done. First we have considered the material of the pipe is rigid. In that case we have derived the equation of the pipe. उस पर प्रेशराइज का जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया था, that is rho into B into C, or you can say क्या था, और ये ही इक्वेशन था बी अंडर रूट ऑफ के इंटू रो। इसको मॉडिफाइड फॉर्म में मैंने ये लिखा था, यू अंडरस्टैंड। और व्हेन वी हैव टेकन द मटेरियल ऑफ द पाइप इज इलास्टिक, इन दैट केस द प्रेशर राइज or pressure of the pressure waves produced due to a sudden closure of the valve. When the material of the pipe is elastic, then the pressure rise is given by this formula. So these are the two expressions which are very important to understand. Otherwise you can cram this formula also and put in the numericals. But if you want to understand the clear and real concept of the things, so these derivations should be done by you people. आपको खुद करनी चाहिए, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर मिलेंगी। अदरवाइज इफ़ यू क्रेम द फार्मूला यू विल से दैट फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम, आपका कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं होगा। नो डाउट यू कैन, अगर कोई आपको सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको कर सकते हैं कि फार्मूले में पुट किया और आपको उसको कर सकते हैं। बट अगर जो इसका कंसेप्ट है किस तरीके से करना है, अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं PYQs क्वेश्चन होंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड। तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसका एक्सप्रेशन करना क्या, हाउ यू विल गेट द प्रेशर राइज ऑफ द प्रेशर वेव्स इन केस ऑफ द material in case of the pipe
when the material is low stake. In that case, the pressure rise, जो आपका equations था, that is different. And in case of the rigid pipe, the pressure rise is different. And in case of gradual closure of the valve, the pressure rise is different. That is rho V L upon T. You understand? तो तीनों केसेस में आपका जो प्रेशर राइज, आपका जो प्रेशर वेव्स प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू हैमरिंग ऑफ द वाटर, दैट इज हैविंग द डिफरेंट फार्मूला. यू अंडरस्टैंड? और तीनों का एक्सप्रेशंस मैंने आपको करवाया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक इसको समझने की कोशिश करें, एंड देन यू कैन कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर. सो नेक्स्ट lecture that is on after 2-3 days. So thank you very much.